Hi guys, welcome back to my channel. I'm Ishita and I'm a psychologist. And today we're going to talk about generalized anxiety disorder. कई लोगों ने ये term सुना होगा, but I wanted to talk about how generalized anxiety disorder is different from generalized anxiety. सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये जो एंजाइटी आपको हो रही है उसकी सिवियरिटी क्या है. इज इट जस्ट माइल्ड जनरल एंजाइटी और इज इट वेरी सीवियर. मतलब क्या वो एक डिसऑर्डर के लेवल की एंजाइटी है. सेकेंडली, पीपल टेंड टू सेल्फ डायग्नोज. मतलब खुद से अज्यूम एंड डिक्लेयर करना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है. सपोज आपको सर्दी जुकाम होता है, यू गेट अ कोविड टेस्ट डन, राइट. उसी तरह पीपल नीड टू रियलाइज दैट एक मेंटल हेल्थ इशू को सिर्फ एक प्रोफेशनल ही डायग्नोज कर सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ GAD as given in the DSM-5. Excessive anxiety and worry occurring more days than not for at least 6 months about a number of activities. Suppose you're really worried about your work or your school, and अभी कुछ टाइम पहले तक people were genuinely anxious about the whole coronavirus situation. But all this is not really generalized anxiety disorder. It has to be a number of different issues. जितना ज़्यादा चीज़ें आपको वरी में डाल रही हैं, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है. ऑल्सो ह्यूमन्स का बेसिक नेचर होता है टू वरी अबाउट थिंग्स इन लाइफ. प्रॉब्लम्स तब बढ़ती है व्हेन यू कैन नॉट स्टॉप वरिंग. जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में सोशल सेटिंग्स एक ट्रिगर होता है. स्पेसिफिक फोबिया में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक ट्रिगर हो सकता है. बट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो वरी में डालती हैं. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर ऑफ वरिंग without a specific trigger. The individual finds it difficult to control the worry. I need to emphasize again, एक mentally healthy individual को भी worry होता है, but वो worry manageable होती है. For a person with GAD, this worry is difficult to control. Even if you practice healthy coping skills, practice self-love, or try distractions, they don't really work. The anxiety and worry are associated with 3 or more of the following: restlessness or feeling on edge. जैसे बेचैनी सी फील होना, जैसे हम किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते टाइम लॉग इन करते टाइम फील करते हैं. दैट रेस्टलेसनेस बट लाइक फॉर द होल डे, पूरे दिन ऐसे जब फील होता है. फीलिंग ईजिली फटीग्ड, जैसे फिजिकल एक्टिविटी बॉडी को थकाती है, उसी तरह वरिंग अबाउट थिंग्स ऑल डे, थिंकिंग अ लॉट हमारे माइंड को थकाता है. डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, मतलब यू आर ट्राइंग टू रीड समथिंग एंड देन यू हैव टू री रीड इट बिकॉज यू डिडंट पे अटेंशन, या जो पढ़ा वो दिमाग में गया नहीं. और फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोफेसर इज टीचिंग इन क्लास एंड यू कैन नॉट पे अटेंशन टू वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज योर माइंड इज प्री ऑक्यूपाइड विद ऑल द वरीज. इरिटेबिलिटी, सो इफ योर फ्रेंड्स आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वो आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मेकिंग जोक्स, you might feel very irritated because all this makes it very difficult to focus on what you're worrying about. And ऐसे में people tend to lash out. Muscle tension. Sometimes for some people, they feel that their body's muscles are tensing up every time they worry about something. Sleep disturbance. नींद आने में दिक्कत होती है या नींद बार बार खुलती है. Your worrying thoughts are occupying your brain so much that you cannot even rest. Your worrying thoughts are even affecting your sleep. The anxiety, worry, or physical symptoms cause clinically significant distress or impairment in social, occupational, and other important areas of life. मतलब ये जो worries और चिंता आपको हो रही है, इसकी वजह से आपकी वर्क या स्कूल लाइफ इफेक्ट हो रही हो, मार्क्स कम आ रहे हो, या यू डोंट लाइक योर वर्क एनी मोर, यू मे फील डिस्टेंट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है. एंड लास्टली, दीज फीलिंग्स शुड नॉट बी ड्यू टू सम सब्सटेंस और ड्यू टू सम अदर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. Risk factors are what increase your chances of developing the disorder. We talked about behavioral inhibition when we talked about social anxiety disorder. A simple example would be not answering in class even when you know the answer. Behavioral inhibition stops you from doing what you want to do. Neuroticism एक personality trait है जिसमें there's a tendency to feel negative emotions जैसे sadness, anxiety या mood swings.
Harm avoidance could be when you don't ask a doubt in class because you think they will make fun of you or judge you for that. One third risk of experiencing GAD is genetic. इसका मतलब है there's a huge chance that if someone in your family has had a case of anxiety disorder or this specific anxiety disorder, the chances of you developing increases. Childhood adversities, ill treatment, neglect, abuse, and even overprotective parenting are seen as risk factors of GAD. So, do you have generalized anxiety disorder? Or is it just general anxiety? You still need a diagnosis from a mental health professional. This video is here just to help you rule it out. So, अगर आपको GAD है, your anxiety will be much more severe, more intense, more long lasting. जैसे हमने diagnostic criteria में mention किया था, for more than 6 months. Your anxiety is disproportionate. Like we've discussed before, anxiety सबको होता है, but for people with GAD, इनकी anxiety irrational हो सकती है. They feel more anxiety than they actually have to. Anxiety about everything, all the time. No control over the anxiety. कोई relaxation technique काम नहीं करती, कोई healthy coping skills काम नहीं करते. And the anxiety is affecting your functioning. So if you have symptoms, please reach out to a mental health professional. Please hit like and subscribe if you want to learn more about mental health issues and self-help ways how you can improve your mental health. I'll see you next Friday.